Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटीज एंड मासलेस पार्टिकल्स विषय रे पढ़िबा सो देखो एज पर क्लासिकल डायनामिक्स और क्लासिकल मेकानिक्स आमे जानिछु जे मास होची गोटे एब्सोल्यूट एंड कांस्टेंट क्वांटिटी and it is independent of the motion of the body किंतु as per the theory of relativity यार गोटे अलगा conclusion आसीबो okay according to this theory mass actually change हबो with the velocity so ए जिंस को प्रूव करिया पई आमे किछिटा certain assumptions नेबा first point रे एठी कहूची there exists an entity which is called momentum आमे जानिछु it is the product of mass and velocity so जेमती तमरो क्लासिकल डायनामिक्स रे थिला यार वैल्यूटा से हिसाब रे रिलेटिविटी रे भी आमे याकू मोमेंटम को मास और वेलोसिटी रो प्रोडक्ट हिसाब रे नेबा पुणी ए जो रिलेशन रे देखो एठी मास होची स्केलर वेलोसिटी होची वेक्टर सो मोमेंटम भी गोटे वेक्टर आसीबो आउ ए रिलेटिविटी रे ए मोमेंटम टा विल बी having same direction as that of the velocity as in the classical dynamics then third point रे कहूची the laws of conservation of mass and momentum hold good in relativity also and the fourth point there will be no energy loss due to the interaction okay so a variation of mass with velocity को देखिया पई आमे कोन करिबा याकू फिगर रे बुझिबा सो देखो एठी फिगर रे आमे कोलिजन नेबा दुईटा पार्टिकल रो आ ताकू देखिबा दुईटा अलगा अलगा फ्रेम रो व्हिच आर मूविंग with relative velocities right so देखो एठी दुईटा inertial frames आमे नेला गोटे हला s आ गोटे हला s dash such that this s dash is moving with uniform velocity v with respect to your s in positive x direction so that एठी x और x dash एटा coincide करिवो okay now consider two identical balls a and b such that they are colliding against each other in one dimension okay now suppose a is having a velocity v along positive x direction similarly b is having a velocity minus v along the negative x direction now this is what before collision and after collision both a and b will come to at rest okay so this is what observed by this observer o dash in the frame S test okay so this is viewed from the frame S test किंतु एई समान इवेंट को जदि एई ऑब्जर्वर O देखिला and it is viewed from this frame S then it will look completely different okay for the observer O एठी याकू टिके ध्यान से देखो already frame S test move करूची with a velocity v along positive x direction now a ball B को देखो it is moving along negative x direction with a velocity minus v so plus b minus b cancel हो गला so observer O को देखा जिवो जे b actually rest रे अछि okay तापरे एबे ball A को देखो it is moving with a velocity v the frame is also moving with a velocity v then the velocity of A as observed by this observer O will be suppose u a u रो value आमे बाहर करिबा right now after collision एठी a b rest को पळे आछि when it is viewed by observer O dash किंतु again s dash is moving with a velocity v so this a b actually is moving along with s dash so observer O को लागिबो जे a b is possessing a velocity v okay so this is what relativity okay ताले
एबे आमर काम है ये जो u या बाहर करवा ओके we can calculate this velocity u of the ball as observed by this observer O in the frame S by applying the inverse relativistic velocity addition theorem or the inverse velocity transformation according to which ux is equal to ux dash plus v divided by 1 plus v by c square into ux dash. Now for the ball A एटी ux को आम लिखा u और ux dash को लिखा v so that u रो वैल्यू आसीगला 2v by 1 plus v square by c square. एबे आम जदि कहबा जे बॉल A और बॉल B रो जदि मास हेगला स्मॉल m a and small m b okay as measured by the observer O in the frame S राइट ताले देख बिफोर कोलिजन आउ आफ्टर कोलिजन यहाँ आम कौन देखुचु जो ऑब्जर्वर ओ जोटा बाहर करुच्ची ओके जहाँ ऑब्जर्वर ओ को देखा जाउची सो बिफोर कोलिजन ऑब्जर्वर ओ देखिला जे मोमेंटम जदि बॉल ए रो आम बाहर करबा इट विल बी एम ए इंटू यू आउ मोमेंटम बॉल बी रो एम बी इंटू जीरो बिकज इट इज एट रेस्ट तेणुक यार वेलोसिटी किसी भी रही ताले टोटाल मोमेंटम सिस्टम रो केते गला एम ए into u plus 0 or simply mau है एटा आसिला before collision. Now similarly after collision both are moving with a velocity v so ma plus mb into v will be the momentum of the system. Now let us apply the principle of conservation of momentum in the frame S according to which before collision और after collision momentum दुईटा समान हेबा कथा. So आम या इक्वेट करदेला फ्रॉम विच वी गेट द वैल्यू ऑफ v टू बी इक्वल टू एम ए बाय एम ए प्लस एम बी इंटू यू ये जो वैल्यू आम पाइला v ताकू एबे पुट करवा जो u रो वैल्यू आम पाइथिला ओके ये जगह आम पुट करदेला या एबे सॉल्व करी जिबा फाइनली वी विल अराइव एट ए वैल्यू एम ए टू बी इक्वल टू एम बी बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर ओके अच्छा एतिकी वैल्यू पाइला पोरे ना एठी देखो कहूची इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विथ टू आइडेंटिकल बॉल्स ओके दुईटा समान आइडेंटिकल बॉल जदि आम नहीं गला देन मास ऑफ द बॉल बी बी इज इट बीटा तुम रेस्ट पोजिशन रे अच्छी एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर ओ सो यार रेस्ट मास को सपोज आम कहबा m0 आउ बॉल ए इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ओ so it is in motion with a velocity u suppose यार relativistic mass जोटा आम बाहर करवा ताकू आम डिनोट कला m ताले m a equal to m and m b will be equal to m0 ताले ऊपर जो रिलेशन पाई थिला से जगह आम रिप्लेसमेंट रखा जदि देन m equal to m0 by 1 minus u square by c square ओके अच्छा ये जो इक्वेशन आम पाइला दिस इज ट्रू for all the velocities of the ball A. Therefore, in general, if a body appears to move to an observer with a velocity v, then its relativistic mass m will be given by m equal to m0 by 1 minus v square by c square. Okay, so this is the final formula for the relativistic variation of mass, right? Hence, এই ইকুয়েশন को एबे लक्ष्य कर ये जो स्क्वायर रूट रो ये क्वांटिटी अच्छी दिस इज लेस देन 1 बिकॉज नो मेटेरियल पार्टिकल कैन हैव ए वेलोसिटी greater than the velocity of light. Okay, material particle will always have a velocity less than the velocity of light. Accordingly, a square root रो value टा सब less than 1 हबो so that m रो value टा always greater than m0 आसीबो. Hence, the mass of a particle when it is moving with a velocity v will be greater than its mass when it is at rest, or in other words the mass of a body increases with its velocity of motion. Now let us see a consequence of your massless particles, right? So massless particle जदि आमे देखिबा suppose for example photon है so एठी कहूची जे material particle cannot have velocity equal to or greater than that of the velocity of light जेमति कहली. Suppose in case of your massless particles like photon which are photon आमे जानिछु these are the quanta of energy. So light consists of particles which are known as photon. These are massless particles. So यार velocity होची equal to that of light. So accordingly एबे जदि आमे
এই ফর্মুলারে আমি পুট করিবা এই ভি স্কোয়ার जो अच्छी दिस विल बी सी स्क्वायर ओके सो दैट एटा कटिगला आ स्क्वायर रूट रो टर्मटा इक्वल टू जीरो आसीज दैट मीन्स एम विल बी हाउ मच इनफिनिटी ओके सो ये कहूँ कौन जे मासलेस पार्टिकल्स एक्चुअली एबे यार जो मासटा रिलेटिविस्टिक मासटा दिस विल बिकम इनफाइनाइट and on the other hand if its velocity is greater than the velocity of light then यार valueटा negative आसीबो okay so both these things are actually impossible okay mass केबे भी infinite हेबोनी किंबा negative हेबो नहीं therefore it means that the material particle cannot have a velocity equal to or greater than that of the velocity of light okay finally let us see some of the conclusions that can be drawn so ऊपर जो इक्वेशन आम देखला से आम पाचु जे mass of any moving system appears to increase with velocity as far as the observer is concerned okay अच्छा सेकेंड पॉइंट कहूँ एम जीरो जदि आम देखा यहाँ हूँ रेस्ट मास दैट इज द मास ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो आ एम हूँ apparent mass by relativistic mass when the body is moving with a velocity v with respect to the observer थर्ड केस रे जदि v इक्वल टू सी आम लिखिदेला ताले एटा हूँ द केस जोटा ऊपर आम डिस्कसन कला हियर द मास बिकम्स इनफाइनाइट ओके सो सी हूँ लिमिटिंग वेलोसिटी फॉर द केस ऑफ मासलेस पार्टिकल्स आउ फोर्थ केस रे जदि वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन सी देन we will have m equal to m0 so एटा आसीगला तुम क्लासिकल न्यूटोनियन मेकानिक्स और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो आम देखुला इन विच द मास ऑफ ए बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट ओके आउ लास्ट पॉइंट रे कहूँ मास विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस okay this is due to the apparent change in velocity of the body from one frame to another okay now let us see how the mass is increasing in an inelastic collision देखो inelastic collision माने आमे जानिचु here the kinetic energy of the system is not conserved so it can be shown that the decrease in the kinetic energy of the system is resulting in the corresponding increase in its rest mass so for this let us consider the same experiment जोटा या पूर्व आम देखुला दुईटा बॉल रो collision जो so the two balls A and B suppose they are having identical masses m0 so these are your rest masses okay so they collide against each other now in the frame s dash the ball A and B were moving with velocity v and minus v जोटा आम देखुला before collision while they come to rest after collision okay same event को जदि आम देखा from the frame s then it indicates that the ball A was moving with a velocity u while the ball B was at rest before collision and the system is moving with a common velocity v after collision तो जदि आम कैपिटल m0 को नहीं जावा सिस्टम रो रेस्ट मास सिस्टम माने कॉम्बिनेशन ऑफ A and B after collision right then applying the law of conservation of momentum मन रख inelastic collision रे जदि kinetic energy conserve नुहे किंतु momentum टा conserve okay so as per the law of conservation of momentum in the frame S we have like this initial momentum will be equal to final momentum so एठी initial momentum को आमे नेइछु m0 u by square root of 1 minus u square by c square similarly final momentum आसी जाउची capital m0 by square root of 1 minus u square by c square into v okay so एठी एटा आछि तमरो जो relativistic mass this quantity and this is the relativistic mass okay এটা before collision এটা after collision okay তাহলে applying now the velocity addition theorem in the inverse form মানে inverse velocity transformation according to which ux is equal to ux dash plus b divided by 1 plus v by c square into ux dash अब पुट कर दबा हमें ux equal to u ux dash equal to v ताले u equal to 2v by 1 plus v square by c square okay so याको एबे रिप्लेस करिबा ऊपर जो इक्वेशन पाइला हमें so after replacing एठी देखो आम ये रिप्लेस करदेला ये जगार आर एच एस तो एज इट इज रहिबो राइट सो याको एबे आमे सॉल्व करी करी जिबा
Okay, so finally we are arriving at the result. Capital M0 is found out to be 2 times of small m0 by square root of 1 minus v square by c square. Now according to classical physics, the mass of the combination of the balls A and B after collision should have been 2m0. ओके बिकज ए आउ बी रेस्ट मास हूँ m0 जदि या कंबाइन करागला क्लासिकल फिजिक्स हिसाब से m0 प्लस m0 इक्वल टू 2m0 हेबा कथा किंतु एज पर इक्वेशन 27 it indicates that एटी देख एटी स्क्वायर रूट टा ऑलवेज लेस देन 1 मु सब कही दैट मीन्स हियर this capital m0 will be greater than 2m0, right? So it indicates that the value m0 capital m0 is greater than 2m0. okay, so जदि difference को आमे नहीं जबा delta m, okay, delta m, suppose it is the increase in mass during the inelastic collision, then its value will be capital m0 minus 2m0 यार value put कला आमे, so delta m रो value आसीगला this much. Hence we can see that there is increase in mass in case of inelastic collision. Thank you.